Hello everyone. The order of magnitude of density of nuclear matter is 10 to the power 4 kilogram per meter cube. You have to check whether this statement is true or false. If I write down the density, it is equals to mass by volume. So if I write down the volume, it is equals to R cube. So if you see, it will be R. We know that R is equals to R naught to the power 1 by 3. So you can just put the value, and if you see here, if I write down the total mass, it will be equals to the mass number times the mass of one nucleon. We know that the mass of one nucleon is 1.6 into 10 to the power 27. So I will write down the density is equals to the number of nucleon times mass of one nucleon in division. It will be 4 pi by 3 r cube. So it is r naught whole cube, a to the power 1 by 3, so it will be a only. So this will get cancelled out. Now you can just put the value of this r naught, and if you see here, you can we know that the r naught value is equals to 1 point this into 10 to the power minus 15 meter. So just put it. So I will write down in division. It will be cube. So if you see, this is in the order of 10 to the power 17 kilogram per meter cube, not in the order of 10 to the power 4. So this statement is false. Right? The correct order will be 10 to the power 17 kilogram per meter cube. Simple. Thank you. इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो आइसोटोप है बोरान 512 उसका मास जो है वो 12.014 यू है, वो बीटा डीके कर रहा है। तो बीटा डीके में बेसिकली होता क्या है, हमारे पास न्यूट्रॉन डीके करता है, एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन देता है, साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो भी जो है वो निकलता है। तो यहाँ पे यदि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काउंट करें तो 12 माइनस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, और यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काउंट्स करें तो 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा 6। तो मीन्स यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखो एक कम हो चुका है, और वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस में कन्वर्ट हो गया, एक नंबर ऑफ प्रोटॉन में। तो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी, जो प्रोटॉन की क्वांटिटी है या नंबर है, वो एक इंक्रीज कर गया है। तो ये कौन सा डीके हो रहा है, बीटा डीके हो रहा है। ये जो न्यूक्लियस है कार्बन 612 वो अपने एक्साइटेड स्टेट में है, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टार से। कब ये एक्साइटेड स्टेट में हो चुका है, ये इस एनर्जी पे 4.041 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पे एक्साइटेड स्टेट में हो चुका है एबव इट्स ग्राउंड स्टेट। तो ऑफकोर्स एक्साइटेड स्टेट कहाँ होगा, ग्राउंड स्टेट के ऊपर ही होगा। ये बोल रहा है कि इफ ई कोई दूसरा न्यूक्लियस है 512 वो डीके करता है इस न्यूक्लियस में, तो द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल क्या होगा इन द यूनिट ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बीटा पार्टिकल की मैक्सिमम एनर्जी पूछ रहा है। यदि ऐसा केस है तो बेसिकली हमारे पास जो कंडीशन दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से कि बोरान 512 जो है वो डीके कर रहा है कार्बन 612 में, एंड देन ये जो कार्बन 612 है ये, तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में होने के लिए जो एनर्जी है वो कितनी है 4.041 इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यदि हम ये निकालेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लस बीटा पार्टिकल इमिट हो रहा होगा, तो बीटा पार्टिकल की एनर्जी जब निकालेंगे, एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, तो वो हमारे पास क्या निकल जाएगा। ऑफ कोर्स इसका मास कितना दे रखा है, बोरान का मास दे रखा है 12.014, और कार्बन का मास कितना दे रखा है, कार्बन का मास यहाँ पे गिवन नहीं है, यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ मास नंबर कार्बन का 12 दे रखा है, तो -12। अब ये एमयू में है तो इसको हम 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एनर्जी किस में आएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। इसमें से ये जो एनर्जी है वो भी माइनस करेंगे 4.041,
हमारे पास जो एनर्जी निकल करके आएगी वो अराउंड कितनी आ जाएगी, 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बीटा पार्टिकल की हमारे पास एनर्जी निकल के आएगी। यही पूछा था व्हाट इज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, इंटीग्रल वैल्यू उसकी कितनी आएगी, 9 आ जाएगी यहाँ पे। Hello students, today our question is a nuclear power supplying electric power to a village uses a radioactive material of half-life T year as the fuel. So we have the amount of fuel at the beginning is such that total power requirement of the village is 12.5% of the electric power available from the plant at that time. If plant is able to meet the total power needs of the village for a maximum period of NT years, so we have to find the value of n. So the solution of this question is, initially the radioactive substance, radioactive material is n naught, that is we have it is 100%, and after t year half life, so we left with n naught divided by 2, that is our 50%, and we have after t year we have this is n naught divided by 4, that is 25%, and after t year it will become n naught divided by 8, so this will become 12.5%. so it is given to us, it will become total power requirement of the village is 12.5, so we have to give in the NT. so from this we can say that 1t 2 and 3, so 3t is equals to NT, and by comparing this we get the n is equals to 3 here, and this is the answer for this question. Thank you. Hello guys, here the question is, in a nuclear reactor 235 uranium undergoes a fission liberating 200 mega electron volt of energy. The reactor has a 10% efficiency and produce 1000 megawatt power. If the reactor is to function for 10 years, find the total mass of uranium required. So guys, here we solve the question. So in the question given as power is equals to 1000 mega watt is to be used for 10 years. Okay, for 10 years. So energy supplied by the reactor, is, and power is equals to energy per unit time. So energy is equals to power into time. So put the value of power as 1000 into 10 to the power 6, and time is 10 years. So change it as 365 days into 24 hours into 3600 seconds. Now multiply all these, we get the value as 3.1536 into 10 to the power 17 joule. This is the energy supplied by the reactor. Now the efficiency of reactor is given as 10%. Okay, so now we find the actual energy needed. So actual energy needed as 10 into 3.1536 into 10 to the power 17. So we get the value as 3.1536 into 10 to the power 18 joule. This is the actual energy needed, okay, by the reactor. Now one uranium atom, as in the question given as one uranium atom liberates 200 mega electron volt. So
means 200 into 1.6 into 10 to the power minus 19 into 10 to the power 6. So this is how much liberate? That is 3.2 into 10 to the power minus 11 joule. So number of uranium's atom needed, that is, so number of uranium atoms needed is actual energy divided by energy liberated by one uranium atom. So that is 3.1536 into 10 to the power 18 upon energy liberated by one uranium atom. So that is 3.2 into 10 to the power minus 11. So by solving this, we get 0.9855 into 10 to the power 29. Now, we find the amount of kg moles of uranium needed. Now, amount of kg moles of uranium needed. So here what we do, number of atoms divided by the Avogadro number. So number of atom is 0.9855 into 10 to the power 29 divided by the Avogadro number, that is 6.02 into 10 to the power 26. So this gives us the 163.7. So total mass of uranium is what? Means total mass of uranium is mass of one uranium into number of kg moles. So mass of one uranium is 235 into 1 into number of kg moles, that is 163.7 kg. So this value is approximate as 38470 kg. So here mass required as 3.847 into 10 to the power 4 kg. This is the final answer. This mass required. Thank you.